Hello guys, good evening everyone. I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. We are here at the channel that is Let's Crack NEET PG. Welcome everyone. Myself, Dr. Nidhi, I am alumni of King George Medical University, KGMU, Lucknow. I am teaching you all physiology, and guys, we all know that physiology weightage is very much high. Around 15 to 20 question every year come in our exam, that is NEET PG examination. So everyone clear the concept of physiology so that you will be able to score more in your exam and you will be able to achieve your target. You will be able to crack your exam with good rank. Before starting, everyone download the Unacademy learning app and follow me out there. My page is unacademy.com/@KAGMC. This page link is given in description box also. You can directly access from that link only. ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्स हैं, पेड कोर्सेज चल रहे हैं. By using my referral code, that is Dr. Nidhi, you will able to access these paid courses, and there are many more special classes which you can attend anytime. Clear everyone? Chalo. There are different various renowned educator also in this platform, so you will be definitely benefited from this plus subscription. Now coming to the benefit of plus subscription. In plus subscription, you will get to attend daily live classes. In Unacademy, daily live classes is conducted. In live classes, you can interact with your educator and you can clear your doubt in live classes only. There are many live tests, live quizzes, जिससे आप एनालाइज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को. बहुत सारी कोर्सेज चल रही हैं, बैच कोर्स, कैप्सूल कोर्स. गुड इवनिंग डॉक्टर प्रभाकर. Many batch courses, many capsule courses are going there, so you can attend them. Structure schedule होता है. If you follow that structure schedule, you will definitely able to achieve your target, everybody. Now coming to the iconic subscription. In iconic subscription, you will benefited from these plus benefits. Along with that, you will get to access the prep ladder. In this, you can access the video lecture of prep ladder. You can access the question bank of prep ladder. You can attend the rapid revision course and you will also get handwritten note. So if you want this also, you can go for the iconic subscription. Now coming to the subscription fees. Subscription fees बहुत ही economical है. Iconic subscription is starting from 1 year. 1 year fees is 55,000. 18-month fee is 66,000. 24-month fee is 77,000. 36-month fee is 92,000. After using my referral code, that is Dr. Nidhi, you will get instant 10% discount in your subscription and your subscription fee will become more economical. 12-month fee will reduce and it will come to 49,500. 18-month fee will reduce to 59,400. 24-month fee will become 69,300 and 36-month fee will become 82,800. So do use my referral code, that is Dr. Nidhi. Now coming to the plus subscription. Plus subscription are also available for 1 month, 3 months, 6 months. So according to your requirement, you can take the subscription. If you are giving the exam this year only, I will suggest go for the 1 month or 3 month according to your requirement. But if you are going to appear for the next examination, I will highly suggest go for the 1 year subscription, because you will get enough duration to revise your topic and attend more and more classes. And I will suggest final year student go for the at least 2 years subscription. Okay, Dr. Prakhar, welcome. 36-month fee will become 50,000. 1 month fee is 5,000. 3 month fee is 12,500. 6 month fee is 22,500. 12 month fee is 27,500 and 18 month fee is 32,500. 2 year fee is 40,000 and 36 month fee is 50,000. After using my referral code, that is Dr. Nidhi, you will get instant 10% discount in your subscription and your subscription fee will become somewhat like this. 1 month will become 4,500. 3 month fee will become 11,250.
6-month fee will become 20,250. 12-month fee will become 24,750. 18-month fee will become 29,250. 24-month fee will become 36,000 and 36-month fee will become 45,000. So do use my referral code, everyone. Everyone download this app, Telegram app, and follow this page, Unacademy Physiology or NEET Physiology, so that you will get notification of every class and you won't miss single class, everybody. So follow this page. Now coming to our topic, that is today we will study about vascular system. First of all, we are talking about hematopoiesis. Hematopoiesis means our blood cell formation. Now coming to the different age group and its sites for hematopoiesis. From 3 weeks to 3 months of intrauterine life, the hematopoiesis occur in our yolk sac. That's why it is also known as primary site of hematopoiesis. Clear? From 3 months to 5 months of intrauterine life, the hematopoiesis occur in liver and spleen. Clear? From 6 months of intrauterine life to 20 years, जो production होता है, that is in red bone marrow. Both red bone marrow of long bones and flat bones. Good evening, Dr. Pandey. ठीक है? 6 months of intrauterine life से 20 years तक bone marrow में, red bone marrow में हमारा hematopoiesis होता है. और हम सभी जानते हैं कि up to 20 years रेड बोन मैरो हमारा बोथ लॉन्ग बोन्स एंड फ्लैट बोन्स में होता है. ठीक है, आफ्टर 20 ईयर क्या होता है, देयर इज फैटी इन्फिल्ट्रेशन इन दिस बोन मैरो एंड दिस बोन मैरो कन्वर्टेड इनटू येलो बोन मैरो. ठीक है, so no longer long bones contain the red bone marrow. इसीलिए after 20 year the hematopoiesis occur in red bone marrow of only flat bones. Clear? From 3 weeks to 3 months of intrauterine life, hematopoiesis occur in yolk sac. From 3 months to 5 months, it occurs in liver and spleen. From 6 months of intrauterine life to up to 20 years of birth, the red bone marrow of both long bones and flat bones. After 20 years, red bone marrow of only flat bones. Good evening, Dr. Ambuj. This is the graph showing the hematopoiesis. The primary site of hematopoiesis is yolk sac. ठीक है? After yolk sac, our liver and spleen. ठीक है? And after 6 months of 3 to 6 months of intrauterine life, और आफ्टर 6 मंथ टू 20 ईयर्स हमारा बोन मैरो में रिएक्शन होता है. इनिशियली लॉन्ग बोन्स सच एज फीमर्स, टिबिया, इसमें भी होता है. ठीक है, बट आफ्टर दैट इट अकर्स इन ओनली फ्लैट बोन्स, वर्टिब्रा, पेनिस, पेल्विस, स्टर्नम, रिब्स. क्लियर? चल, इनिशियली जो माइलॉइड एरिथ्रॉइड रेशियो में देखने को मिलता है, दैट इज 3:1. Remember this point, myeloid to erythroid ratio is 3:1. अब बात करते हैं डिफरेंट सेल के प्रोडक्शन की. फर्स्ट ऑफ ऑल erythropoiesis, RBC प्रोडक्शन देखेंगे अब हम. All the hematopoiesis starts from common cell, that is pluripotent hematopoietic stem cells, also known as PHSC. ठीक है, do remember this point. All hematopoiesis occurs from the common stem cell, that is pluripotent hematopoietic stem cells. ठीक है, on this hematopoietic stem cell transcription factors act. कौन सा transcription factor? GATA and FOG, that is friend of GATA. These two are transcription factors. Good evening, Dr. Umakant. ठीक है, on acting this transcription factor on pluripotent hematopoietic cell, it gave formation of burst forming unit erythrocytes. It is the earliest committed erythroid precursor. Do remember this point. Burst forming unit erythrocyte is earliest committed erythroid precursor.
फ्रॉम बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट हमारा फॉर्म होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट and it has highest erythropoietin receptors. Underline this point, this is very important. This colony forming unit has highest erythropoietin receptor. Put lot of star mark here. ठीक है, hello Dr. Akriti. Colony forming unit has highest erythropoietin receptors. ठीक है, from colony forming unit there is production of pro-erythroblast. From pro-erythroblast hemoglobin synthesis begin. ठीक है, अब बात करते हैं from pro-erythroblast there is formation of basophilic erythroblast. And from basophilic erythroblast there is formation of polychromatic erythroblast. This is a stage where hemoglobin starts to appear. Underline this point, this is also very important. Polychromatic erythroblast, it is also known as late normoblast. इसी stage में hemoglobin starts to appear. Good evening Dr. Mukesh. Clear? हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट का. दिस पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में ही हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स टू अपीयर एंड इससे फॉर्म होता है हमारा ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट. इस स्टेज में फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट. ठीक है, अब पॉलीक्रोमैटिक से ऑर्थोक्रोमैटिक हुआ. ऑर्थोक्रोमैटिक से क्या होगा, हमारा पिक्नियोटिक न्यूक्लियस रिलीज होगा एंड वी विल गेट रेटिकुलोसाइट. दिस रेटिकुलोसाइट्स आर इमेच्योर आरबीसी और फर्दर ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और विद इन 24 आवर्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर आरबीसी दैट इज आर एरिथ्रोसाइट एंड इट्स नॉर्मल साइज इज 7.2 माइक्रोन. Clear everyone? All these stages are important. बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट बनता है, पहले प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट बनता है. बर्स्ट फॉर्मिंग अर्लीस्ट कमिटेड सेल होता है. बर्स्ट फॉर्मिंग से बनता है हमारा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट. कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट हमारा सबसे ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पे होते हैं. कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से हमारा फॉर्म होता है प्रो-एरिथ्रोब्लास्ट. डॉक्टर डॉन, आप कल भी यही क्वेश्चन कर रहे थे, एनाटमी का क्लास नहीं चल रहा है, फिर से आपको कह रही हूँ ज़्यादा डिस्टर्ब कीजिएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको, आप किसी प्लेटफॉर्म पे एक्सेस नहीं कर पाओगे. ठीक है, हमारा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से बनता है प्रो-एरिथ्रोब्लास्ट. प्रो-एरिथ्रोब्लास्ट क्या होगा, प्रो-एरिथ्रोब्लास्ट में हमारा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट्स. ठीक है, फ्रॉम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट हमारा फॉर्मेशन होता है पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट का, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट का. बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट विच इज ऑल्सो नोन एज लेट नॉर्मोब्लास्ट. इसी स्टेज में हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स टू अपीयर. पॉलीक्रोमैटिक से फॉर्म होता है हमारा ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट जिसमें हमारा फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है एंड फ्रॉम ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट रेटिकुलोसाइट का फॉर्मेशन होता है एंड फ्रॉम रेटिकुलोसाइट हमारा एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन होता है. क्लियर एवरीवन? चलो, अगेन दिस इज अ डायग्राम शोइंग आवर एरिथ्रोपोइसिस. हमारा बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट अर्ली यूनिट, बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट लेट. इससे फॉर्म होता है हमारा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट and it has highest erythropoietin receptor. We give erythropoietin in kidney failure, so it क्या पूछना चाह रहे हैं आप उमाकांत? फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन.
आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से बनता है हमारा प्रोएरिथ्रोब्लास्ट. दिस प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से फॉर्मेशन होता है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट का. बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट से हमारा बनता है पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट. दिस इज द स्टेज जहाँ पे हीमोग्लोबिन स्टार्ट्स टू अपीयर. फ्रॉम पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट बनता है ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट. ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट से पिक्नोटिक न्यूक्लियस सेपरेट होता है एंड आवर रेटिकुलोसाइट्स फॉर्म करता है. एंड दिस रेटिकुलोसाइट्स गोज इनटू ब्लड सर्कुलेशन एंड विद इन 24 आवर इसकी मैच्योरेशन हो जाती है एंड इट विल फॉर्म एरिथ्रोसाइट्स. क्लियर एवरीवन? डॉक्टर उमाकांत, क्या कंफ्यूजन है आपको? एरिथ्रोपोइटिन के बारे में आगे पढ़ेंगे, शायद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए. आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. अगर आप रिपीट करते तो मैं इसी पॉइंट पे क्लियर कर देती. अब आ जाओ, फैक्टर्स रेगुलेटिंग आर एरिथ्रोपोइसिस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आर एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन. दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड अंडर द स्टिमुलस ऑफ हाइपोक्सिया. व्हेनेवर देयर इज यस डॉक्टर उमाकांत, जब किडनी फेलियर पेशेंट में एनीमिया होता है तो इसीलिए हम एक्सटर्नली एरिथ्रोपोइटिन देते हैं, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर आरबीसी प्रोडक्शन. वेरी गुड. स्टिमुलस एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज का है. मोस्ट कॉमन स्टिमुलस इज हाइपोक्सिया एंड दिस इज रिलीज मेनली फ्रॉम आवर किडनी. 85% of erythropoietin is secreted from our kidney only. ठीक है, and it is also secreted from liver, brain and uterus. And this hormone acts via the Janus kinase receptor, or it is also known as JAK-STAT pathway. ठीक है, और whenever there is mutation in this Janus kinase receptor, there is polycythemia vera. ठीक है, क्लियर? एरिथ्रोपोइटिन का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस क्या है? हाइपोक्सिया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इज किडनी. 85% ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम आवर किडनी ओनली. बिसाइड दैट लिवर ऑल्सो सिक्रेट एरिथ्रोपोइटिन, ब्रेन ऑल्सो सिक्रेट एरिथ्रोपोइटिन, यूट्रस ऑल्सो सिक्रेट्स एरिथ्रोपोइटिन एंड इट एक्ट वाया द Janus kinase receptor और JAK-STAT pathway. क्लियर? चलो, this is our normal blood oxygen level. Whenever there is imbalance, तो क्या होगा? There will be hypoxia, and this hypoxia is sensed by our kidney, and this kidney release our erythropoietin hormone. ठीक है, and this erythropoietin क्या करता है? That stimulate our red bone marrow, and हमारी erythropoiesis enhance हो जाती है, and oxygen carrying capacity increase हो जाती है, and हमारा नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल रीच हो जाता है. क्लियर? चलो, अब बात करते हैं दिस एरिथ्रोपोइटिन को. सेम वही स्टेजेस हैं, रिपीट हैं. हेमाटोपोइटिक, प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से बनता है बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट. बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट से बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एंड दिस हैज हाईएस्ट एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर. ठीक है, बिसाइड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट आल्सो हैज एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर. बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट आल्सो हैज एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर. सो वी हैव टू रिमेंबर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, proerythroblast and basophilic erythroblast, all three have erythropoietin receptors. Clear? ठीक है, clear everyone? अब बात करते हैं नॉर्मोक्सिया कंडीशन में why this erythropoietin is not increasing our hormone production or it is not increasing our erythropoiesis. Because in normoxia condition what happen? Hypoxia inducible factor is binded with a protein known as von Hippel-Lindau protein.
Type 1 polycythemia vera jack mutation, right? Yes, Dr. Umakant, very good. Hypoxia inducible factor नॉर्मोक्सिया कंडीशन में वॉन हिप्पल लैंडाउ प्रोटीन से बाइंडेड होता है एंड ड्यू टू दिस बाइंडिंग क्या होता है, इट अंडरगो डिग्रेडेशन. ठीक है, और ड्यूरिंग हाइपोक्सिया दिस हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर सेपरेट फ्रॉम वॉन हिप्पल लैंडाउ प्रोटीन. ठीक है, और ये सेपरेट होते ही it act as a transcription factor for erythropoiesis and our erythropoiesis increases. ठीक है, this is normoxia condition. इस normoxia condition में क्या है, von Hippel-Lindau प्रोटीन से हमारा hypoxia inducible factor binded होता है and it undergo finally degradation. ठीक है, while in hypoxia this hypoxia inducible factor is separated from this von Hippel-Lindau protein and it acts as a transcription factor for our erythropoiesis. Clear everyone? Chalo, अब beside erythropoietin there are other hormone which also regulate our erythropoiesis. First is growth hormone, second is thyroid hormone, third is cortisol. These all increases our erythropoiesis. Testosterone also increase our erythropoiesis. Therefore, male has more RBC. Clear? डॉक्टर उमाकांत, कहाँ कंफ्यूजन है? वॉन हिप्पल लैंडाउ प्रोटीन, आई गेस इसमें कंफ्यूजन होगा. नॉर्मोक्सिया कंडीशन में क्या होता है, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर. दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. दिस इज अ transcription factor for our erythropoiesis. जैसे हमने गाटा एंड फ्रेंड ऑफ गाटा, दे आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. तो इस तरह हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है हमारे एरिथ्रोपोइसिस का. तो नॉर्मोक्सिया कंडीशन में क्या होता है, दिस इज बाइंडेड टू वॉन हिप्पल लैंडाउ प्रोटीन. ठीक है, दिस बाइंडिंग कॉजेज, दिस इज द नॉर्मोक्सिया कंडीशन. इसमें वॉन हिप्पल लैंडाउ प्रोटीन से ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर बाइंड हो जाता है एंड इट अंडरगो डिग्रेडेशन. ठीक है, जबकि हाइपोक्सिया जैसे ही होगा तो दिस हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर सेपरेट हो जाता है वॉन हिप्पल लैंडाउ प्रोटीन से एंड इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर एरिथ्रोपोइसिस एंड हमारी एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज हो जाएगी. आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, हाइपोक्सिया इज मेंटेन्ड. क्लियर डॉक्टर उमाकांत? क्लियर? नॉर्मोक्सिया कंडीशन में ये वॉन हिप्पल लैंडाउ प्रोटीन से बाइंड करते हैं एंड इट अंडरगो डिग्रेडेशन. क्लियर? चलो, अब आते हैं नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन हमारा एरिथ्रोपोइसिस को इनहिबिट करता है. That's why in male RBC count is more, in female RBC count is less. डॉक्टर उमाकांत, एरिथ्रोपोइसिस नॉर्मोक्सिया कंडीशन में भी होता है, बट जो ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर है दैट इंक्रीजेस our erythropoiesis, not start our erythropoiesis. Beside that, there are many other transcription factor which is acting in normal condition also. ठीक है डॉक्टर उमाकांत, नॉर्मल कंडीशन में हमने गाटा, फ्रेंड ऑफ गाटा, ये दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़े थे. नॉर्मोक्सिया कंडीशन में ये वर्क करते हैं. जब हाइपोक्सिया होता है तो एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज होता है एंड दिस इज अंडर दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ओनली.
क्लियर डॉक्टर उमाकांत? चलो अब बात करते हैं, देर आर कमर्शियली अवेलेबल रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ आवर एरिथ्रोपोइटिन. The most commonly used are epoetin alpha and darbepoetin alpha. These two are important, our recombinant form of erythropoietin. ठीक है, और they are used in anemia of chronic diseases and in dialysis. डॉक्टर उमाकांत आप पूछ रहे थे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे सब टॉपिक कवर हो जाता है. ड्यूरिंग डायलिसिस व्हाट हैपन, हमारा किडनी डैमेज्ड है, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं हो रहा है, and due to this erythropoietin release नहीं हो रहा है, that's why we are giving the recombinant form of erythropoietin such as epoetin alpha or darbepoetin alpha. Clear? चलो हार्मोनल फैक्टर्स कवर कर लिया. अब आते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर. दे आर न्यूट्रिशनल फैक्टर विच आल्सो रेगुलेट आवर एरिथ्रोपोइसिस. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आयरन and vitamin B12 and folic acid. Iron is responsible for heme synthesis of in the RBC, and vitamin B12 and folic acid are responsible for the maturation of DNA. ठीक है, so whenever there is deficiency of vitamin B12 and folic acid, there will be no maturation of DNA. DNA mature नहीं होगा, cell division नहीं होगा. Cell division will not occur, and due to this what happened, there will be large and immature cells. ठीक है, and this is known as our megaloblastic anemia, large and immature cells due to the deficiency of vitamin B12 and folic acid. ठीक है, this is our normal blood cell and this is megaloblastic anemia, large and immature cells. Clear everyone? This is all about our erythropoiesis. Now coming to the next lineage, that is leukopoiesis, our WBC production. We already discussed all our hematopoiesis occur from common stem cell, pluripotent hematopoietic stem cell. ठीक है, pluripotent hematopoietic stem cell give to lymphoid stem cell and colony forming blastocyte. Lymphoid lineage is different, so let's see first this lineage. From pluripotent hematopoietic stem cell there is formation of lymphoid stem cell. From lymphoid stem cell there is formation of lymphoblast, and from lymphoblast there is formation of lymphocyte, and these lymphocyte go further for maturation in bone marrow and spleen and further form T cells and B cells. Clear? अब बात करते हैं हमारा granulocytes के बारे में and monocyte के बारे में. इसकी lineage different है. From pluripotent hematopoietic stem cell there is formation of colony forming blastocyte. ठीक है? From this colony forming blastocyte we will get colony forming unit granulocyte and monocyte. From this there is formation of myeloblast, and from myeloblast there is formation of promyelocytes and monocyte. From here the monocyte lineage is different. From monoblast promonocyte is formed, and from promonocyte monocyte का formation हो जाता है. Clear? अब बात करते हैं हमारे granulocytes की. From promyelocyte there is formation of neutrophil myelocytes, basophil myelocytes and eosinophil myelocytes. ठीक है, from this there is formation of neutrophil metamyelocyte, basophil metamyelocyte and eosinophilic metamyelocytes. Clear? And from this we will get neutrophil, basophil and eosinophil. Clear? This is the lineage of our leukopoiesis. Lymphoid lineage is different, जबकि granulocyte and monocyte की lineage same है. Clear everyone?
एक्सक्यूज मी। चले थ्रोम्बोपोइसिस कवर करें। चलो नेक्स्ट सेम है, देख लीजिएगा। एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट की लीनिएज डिफरेंट है। चलो pluripotent hematopoietic stem cells can be preserved during cutting umbilical or for further treatment of leukemia. It's okay, डॉक्टर उमाकांत, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बोला। न्यू टेक्नोलॉजी में फर्दर ये ट्रीटमेंट के लिए प्रिजर्व किया जा रहा है। चलो अब आते हैं नाउ फैक्टर रेगुलेटिंग आवर ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। दो फैक्टर्स होते हैं इसमें, ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड इट्स कमर्शियल फॉर्म इज फिलगैस्ट्रिन। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, these all promote our leukopoiesis. Interleukin T5 promote our leukopoiesis of eosinophils. Interleukin 3 and 4 is promoting our basophil production. ठीक है, clear? These are the factors which are regulating our leukopoiesis. चलो, now coming to the thrombopoiesis. Thrombopoiesis also start from the same hematopoietic stem cell, that is pluripotent hematopoietic stem cell. ठीक है, इससे फॉर्म होता है ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर थ्रोम्बोलिनेज का, and from this lineage there is formation of megakaryocyte, and this megakaryocyte further lead to formation of platelet. Clear? बोन मैरो में हमारा प्रेजेंट है हेमाटोपोइटिक प्रोजेनिटर सेल्स, प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक सेल। फ्रॉम दिस मेगाकैरियोसाइट फॉर्म होता है, इससे प्रो प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है, फर्दर प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर एवरीवन? चलो अब बात करते हैं नाउ कमिंग टू द फैक्टर रेगुलेटिंग आवर थ्रोम्बोपोइसिस। फर्स्ट फैक्टर इज थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन एंड इट्स कमर्शियली अवेलेबल फॉर्म इज L-thrombopag. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज इंटरल्यूकिन 11, interleukin 11, and its commercially available form is oprelvacin. ठीक है, these two are commercially available recombinant form जिससे हम थ्रोम्बोपोइसिस को प्रमोट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? चलो, now coming to the next topic, that is blood grouping system. Most commonly used blood grouping system is our ABO blood grouping system. This is given by Carl Landsteiner. Antigen which is present in our blood is also known as agglutinogen. Yes, Dr. Umakant. Antibodies in blood group are also known as agglutinin. Antigen are also called as agglutinogen. Antibody in our blood is also known as agglutinin. ठीक है, H antigen is common in all blood group. यानी H antigen हमारा A blood group में भी होगा, B में भी होगा, AB में भी होगा, O में भी होगा। ठीक है, now coming to individual blood group. First A group. A group consists of the common antigen H antigen, A antigen and N-acetyl galactosamine. This is a sugar excuse me, this is a sugar end. ठीक है, सो एक ब्लड ग्रुप में क्या कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट है? ए एंटीजन, एच एंटीजन एंड N-acetyl galactosamine. ठीक है, नाउ कमिंग टू बी ब्लड ग्रुप. B blood group consists of common antigen H antigen, B antigen and a sugar end, that is galactose. Clear? Now coming to the next blood group, that is O blood group. O blood group consists of common antigen, that is H antigen, and there is no sugar end, there is no A or blood B antigen. ठीक है,
There is no sugar end, there is no AB antigen, only H antigen is present in our O group. Now coming to the next blood group, that is AB group. It consists of common antigen, that is H antigen. It consists of both A and B antigen. It consists of both sugar end, that is N-acetyl galactosamine and galactose. Clear? This is our A blood group. This is our B blood group. This is AB and this is O. H antigen, this H antigen is common in all. A में present होगा A antigen, B will contain B antigen, AB will contain both A and B antigen, and O will contain no antigen. Only H antigen यहाँ present होगा. यहाँ पे जो sugar end present होगा, that is N-acetyl galactosamine. यहाँ पे जो sugar end present है, that is our galactose. So in AB group में both our N-acetyl galactosamine and galactose is present. ठीक है, AB blood group में, and O blood group doesn't contain any sugar end. No sugar end is present. Clear? Everyone? Sure. Now coming to the different blood group, that is A blood group content A antigen. H antigen तो सब में common है. ठीक है. Beside H antigen, A blood group consists of A antigen and antibody present in the serum is NTP. ठीक है. B blood group consists of B antigen and antibody in the serum is NTA. AB blood group consists of both A antigen and B antigen, and there is no antibody in the serum. That's why it is universal recipient. Clear? Everyone? Now coming to the next blood group, that is O. It consists of no A, no B, only H antigen is present. That's why it is universal donor. ठीक है. Antibody in the serum is anti-A and anti-B. Clear everyone? चलो. Beside AB and O antigen, हमारे blood के कहाँ present होता है? This antigen is also present in our saliva, semen, testis and amniotic fluid. Clear? अब आते हैं different blood groups system पे. इसमें जो most common है, that is RH system. ठीक है. RH antigen consists of C antigen, D antigen and E antigen. If this D antigen is present, the patient is known as RH positive. ठीक है. If D antigen is absent, person is known as RH negative. This RH incompatibility will lead to erythroblastoses fetalis. Clear everyone? चलो. What is erythroblastosis fetalis? I read it somewhere and gotten maybe blood. Dr. Umakant. I read somewhere in Guyton maybe the has a hormone for blood cancer. हो सकता है कोई थीसिस आई होगी इसके ऊपर, मैंने रीड नहीं किया आई गेस. हो सकता है कि ये स्टेटमेंट भी हो, बट
इसकी थीसिस अभी रिसेंटली आई होगी. अब बात करते हैं व्हाट इज एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस. एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस कब होता है? व्हेन फादर इज RH पॉजिटिव. गुड इवनिंग डॉक्टर गणेश. And mother is RH negative. What happened during first pregnancy? There is no complication. It is successful. But during delivery, what happened? RH antibody start forming in our mother blood. Within 48 hours to 72 hours, हमारा RH antibody mother के body में form होना शुरू हो जाएगा. And during next pregnancy, what will happen? During next pregnancy, what will happen if the baby is RH positive? ठीक है, तो this RH antibody will start acting into the blood of baby, and agglutination reaction will start, and this will lead to erythroblastosis fetilis. Clear? Sure. First pregnancy, what will happen? When the baby is RH positive and mother is RH negative, there is no complication in first pregnancy, but after delivery what will happen? Anti-RH antibody will start forming in our blood. ठीक है? And during second pregnancy, what will happen? During second pregnancy, what will happen? These antibodies start reacting with the blood of this fetus. ठीक है? Due to which what will happen? There will be destruction of fetal RBC. This is going to cause erythroblastosis fetilis. Clear? Sure. This erythroblastosis fetilis will lead to anemia, and this will lead to jaundice. There will be severe jaundice in this case, which is also known as neonatal jaundice. ठीक है? Most common sign is connected is hemolytic anemia and jaundice. ठीक है? And this jaundice is treated via the phototherapy. ठीक है? What does we do in phototherapy? Baby is exposed to certain light, which will lead to the photooxidation of bilirubin. In this photooxidation, what will happen? Bilirubin will be combined with oxygen, and it will become more water soluble. ठीक है? And it will be excreted, and bilirubin level will be become normal. ठीक है? Phototherapy is based on photooxidation of bilirubin. ठीक है? इसमें दो मेथड होता है, कन्वेंशनल एंड फाइबर ऑप्टिक. Clear? And anemia is covered by exchange transfusion. ठीक है? Clear everyone? What is erythroblastosis fetilis? How it is occurring? What we are going to do for the treatment? Clear है सभी को? Everyone? Ma'am, if possible, after lecture, can I get PDF of this lecture and yesterday lecture? Dr. Akash,
PDF आपको नहीं प्रोवाइड हो सकता है, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। आफ्टर लेक्चर प्ले कर लीजिए लेक्चर को और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। फोटोथेरेपी का मैकेनिज्म यही है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो, चाहे नियोनाटल जॉन्डिस हो, तो ये बेसिकली हमारा फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ बिलिरुबिन करता है। बिलिरुबिन विल बी बाइंडेड टू ऑक्सीजन एंड इट विल बिकम मोर वाटर सॉल्युबल एंड इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट। ठीक है, क्लियर? एवरीवन क्लियर? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर क्या कर सकते हैं? आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी वी विल गिव द मदर anti-T serum, so there will be no production of antibodies against Rh antigen. So further there will be no complication. Further there will be no complication during second pregnancy. क्लियर? चलो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हीमोडायनामिक्स, हमारा ब्लड फ्लो। फिजिक्स में सभी ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, याद है? वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इसी को अप्लाई करेंगे हम पूरे हीमोडायनामिक्स को समझने के लिए। इन आवर ह्यूमन बॉडी दिस वोल्टेज इज आवर प्रेशर, ठीक है? Current is blood flow and resistance is the same resistance out here. First, coming to the blood flow. Factors which are affecting our blood flow. First factor is length of vessel. Second is radius of a vessel. Third is viscosity of a blood flow. Viscosity is basically due to the RBC, because RBC is more numerous among all blood corpuscles. That's why viscosity is mainly due to RBC. ठीक है? Blood flow is affected by length of vessels. This is our vessel. Length of vessel, radius of a vessel, and viscosity of flowing blood. And the next parameter, that is pressure difference across the vessel. So let's see, this is the pressure at point A and this is pressure at point B. So blood flow is inversely proportional to the length. More the length, there will be lesser the blood flow. ठीक है? And it is directly proportional to the fourth power of radius. So this radius is the most important parameter affecting our blood flow. ठीक है? अगर हमारा radius twice हो जाता है तो blood flow 16 time increase हो जाएगा. That's why it is most important parameter affecting our blood flow. Clear? Everyone? And it is inversely proportional to the viscosity and it is directly proportional to the pressure gradient. ठीक है? इसी को summarize करेंगे. We will get our Poiseuille-Hagen formula. Poiseuille-Hagen formula states that blood flow is directly proportional to the pressure difference. It is directly proportional to the fourth power of radius and it is inversely proportional to the length and viscosity of blood. Clear? Do remember this Poiseuille-Hagen formula, everyone. Blood flow is directly proportional to the pressure difference, fourth power of radius, and it is inversely proportional to the length of vessels, and it is inversely proportional to the viscosity of blood. Clear?
Now coming to the total cross sectional area. ठीक है, हमारा जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज मोर ऑफ कैपिलरी. क्यों कैपिलरी की सबसे ज़्यादा है? कैपिलरी का अगर डायमीटर या रेडियस की बात करें तो सबसे कम है एज कंपेयर टू आयोटा. बट जब टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं तो यानी सारी कैपिलरीज हमारी इंक्लूड होगी. एंड नंबर ऑफ कैपिलरी आर वेरी न्यूमरस. दैट्स वाई total cross sectional area of capillary is सबसे highest. Then comes our venules, then come our small vein, then come our arterioles, then come our arteries, then come our vena cava, and then come our aorta. ठीक है, and we all know that velocity is inversely proportional to the area. ठीक है, तो velocity of blood flow will be highest in aorta, then vena cava, then arteries, then arterioles, then small vein, then venules, then capillaries. Clear? This is important. काफी बार क्वेश्चन आया है, समझ में आया सभी को? टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं तो कैपिलरी की सबसे ज्यादा होती है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया. आई गेस प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में. क्लियर? चलो, दिस इज द डायग्राम शोइंग आवर वेसल्स डायमीटर. अयोटा की सबसे ज्यादा डायमीटर होती है, कैपिलरीज की सबसे कम होती है. ठीक है, बट द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैपिलरी इज हाईएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ कैपिलरी इज हाईएस्ट. क्लियर एवरीवन? चलो, सेम हमारा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरी की सबसे ज्यादा होती है. दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इज लेस इन आवर कैपिलरीज. क्लियर? चलो, नेक्स्ट पैरामीटर हमारा रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस जब भी वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा इट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस. व्हेनेवर देयर इज vasodilation that will decrease the resistance. Resistance is inversely proportional to the fourth power of radius. This is also known as fourth power law. डॉक्टर उमाकांत, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए. जो भी डाउट होगा आपका हम स्पेशल क्लासेस में कवर करेंगे. इस तरह टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा. अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. बाकी के जो भी डाउट हैं हम स्पेशल क्लास या प्लस क्लास में कवर करेंगे. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर डिटरमाइन द टाइप ऑफ ब्लड फ्लो. ठीक है, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर तो ब्लड फ्लो हमारा टर्बुलेंट हो जाता है या नॉइजी हो जाता है. इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस आवर ब्लड फ्लो इज लैमिनर और इसको स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो भी कहते हैं. ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर डिटरमाइन द टाइप ऑफ ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो दो तरह के होते हैं, लैमिनार ब्लड फ्लो एंड टर्बुलेंट ब्लड फ्लो. लैमिनार ब्लड फ्लो इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो. टर्बुलेंट ब्लड फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉइजी ब्लड फ्लो. क्लियर? दिस इज द डायग्राम ऑफ लैमिनार ब्लड फ्लो. ठीक है, इन दिस ऑल लेयर ऑफ द ब्लड इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी. ठीक है, while in turbulent blood flow there is flow in different directions. Clear? Now coming to the difference, laminar blood flow there is steady blood flow, turbulent blood flow it is unsteady blood flow. In laminar blood flow at the level of same distance, and in this there is mixing of different layer. There is no sound production in laminar blood flow, there is sound production in laminar blood flow. Clear? These all are different, and this turbulence is heard as a murmur. Clear? Now coming to the Reynolds number. When the Reynolds number is less than 2000,
the flow is laminar. When Reynolds number is more than 3000, the flow is turbulent. And between 2000 and 3000, the flow is transitional. ठीक है? Below 2000, flow is laminar. More than 3000, it is turbulent. Clear? अब आते हैं most important, that is factor affecting our Reynolds number. Reynolds number is dependent on density of a blood, diameter of a vessel, velocity of blood flow, viscosity of blood. Reynolds number, it is directly proportional to the density of blood, it is directly proportional to the diameter of blood, it is directly proportional to the velocity of blood flow, and it is inversely proportional to the viscosity of blood. ठीक है? Everyone remember this. Reynolds number is directly proportional to the density, diameter, velocity, and it is inversely proportional to viscosity. ठीक है? Everyone. चलो. What happened in anemia and pregnancy? RBC production is less. ठीक है? And due to this, what will happen? Viscosity of blood will be less. And we all know Reynolds number is inversely proportional to the viscosity. So viscosity decreases, Reynolds number increases, Reynolds number increases, it will cause turbulence. And this turbulence will cause our flow murmur. Clear? Everyone. Next, aorta and pulmonary artery. इनके diameters क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं. And Reynolds number is directly proportional to the radius of a vessel wall. तो Reynolds number क्या होगा? Increase. ठीक है? Reynolds number increase होगा, it will cause turbulence, and that's why aorta and pulmonary artery has highest turbulence. Clear? Everyone. Clear? चलो. अब आते हैं next topic, that is vascular injury. ठीक है? इसमें क्या होता है? जब भी कोई vascular injury होती है, first phenomena is there is release of serotonin and there is release of thromboxane A2. These two are secreted from our platelets. ठीक है? These platelets secretes both serotonin and thromboxane A2. ठीक है? These two cause vasoconstriction, and due to this vasoconstriction there is decrease in blood loss. ठीक है? And second step में क्या होता है? There is activation of our clotting factor, our clotting cascade start, our clot formation pick up. Due to clot formation, what will happen? Blood loss will be stopped. Clear? अब आते हैं डिटेल में कि कैसे हमारा hemostasis होता है. ठीक है? First of all, there is vasoconstriction from the serotonin and thromboxane A2. ठीक है? These all both causes vasoconstriction, and there is platelet plug formation. ठीक है? And there is activation of clotting cascade, and finally definitive clot formation हो जाता है. Clear? First of all, there is vasoconstriction. Vasoconstriction के बाद क्या होगा? Platelet plug formation start होता है, and हमारा clotting cascade activate होता है, and definitive clot का formation होता है. Clear? चलो. Now coming to the clotting factor. There are 12 clotting factors in our body. First clotting factor is fibrinogen. Clotting factor 2 is prothrombin. Clotting factor 3 is tissue thromboplastin. Clotting factor 4 is calcium. Clotting factor 5 is proacceleratin. Clotting factor 7 is proconvertin. Clotting factor 8 is anti-hemophilic factor A. This factor is deficient in our hemophilia A, factor 8. That's why it is also known as anti-hemophilic factor A. Next factor, factor 9 is anti-hemophilic factor B. It is also known as Christmas factor.
This factor is absent in hemophilia B. Then factor 10, it is also known as stored power factor. Then factor 11, which is also known as anti-hemophilic factor C, which is absent in a hemophilia C. Next factor is factor 12, that is known as Hagman factor. Okay? And last factor is also known as fibrin stabilizing factor. Factor 13 is fibrin stabilizing factor. ठीक है, सभी टर्म्स याद रखिएगा, सभी के नाम याद होने चाहिए. First is fibrinogen, second is prothrombin, third is tissue thromboplastin, fourth is calcium, fifth is proacylserine, seventh is proconvertin, eighth is anti-hemophilic factor A, ninth is anti-hemophilic factor B, 10th is stored power factor, 11th is anti-hemophilic factor C, 12th is Hagman factor, 13 is fibrin stabilizing factor. Clear? अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर. और फैक्टर 2 आफ्टर फैक्टर 7, 9 and 10. These all 4 are vitamin K dependent clotting factor. ठीक है, clear? Now coming to the coagulation pathway. Most important pathway of our clot formation, that is coagulation pathway. इसमें 3 pathway होते हैं, intrinsic pathway, extrinsic pathway and common pathway. Intrinsic pathway is also known as contact activation pathway. ठीक है, it is done in vitro activation. Clear? Intrinsic pathway is also known as contact activation pathway or in vitro activation pathway. Extrinsic pathway is also known as tissue factor pathway. Clear? फिर आता है लास्ट कॉमन पाथवे. अब डिस्कस करते हैं कैसे कैसे हमारा क्लॉट का फॉर्मेशन होगा. इंट्रिंसिक पाथवे, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर 12 पे एक्ट करता है हमारा हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन एंड कैलिक्रेनिन. These two factor causes activation of factor 12. ठीक है, this activated factor 12 will activate factor 9 and this activated factor 9 will activate our factor 8. ठीक है, और इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा और एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा. अब एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, दैट इज फैक्टर 3. ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट होता है, ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 7 को, फैक्टर 7 एक्टिव फॉर्म में. ठीक है, एंड दीज टू 7 and 8 now go into the common pathway and this will activate our factor 10. ठीक है, फैक्टर 10 एक्टिवेट होगा and this will activate our factor 5. ठीक है, and this activated factor 10 and this activated factor 5 in the presence of calcium. कैल्शियम कौन सा फैक्टर था, एनीवन? फैक्टर 4. ठीक है, फैक्टर 10, फैक्टर 5, फैक्टर 4 will help in conversion of prothrombin into thrombin. ठीक है, क्लियर यहाँ तक. अब थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है हमारा फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में एंड दिस फिब्रिन in the presence of factor 13, that is fibrin stabilizing factor. याद है सभी को, fibrin stabilizing factor, and this fibrin stabilizing factor act on fibrin and there is definitive clot formation. Clear? Everyone clear? एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं? फैक्टर 3, फैक्टर 7. ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं? एनीवन? फैक्टर 12, फैक्टर 10, फैक्टर 8. ठीक है, कॉमन पाथवे में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं? हमारा फैक्टर 10, फैक्टर 5, फैक्टर 4, फैक्टर 2, फैक्टर 1 एंड फैक्टर 13. ठीक है, क्लियर.
हमें ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए. एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, कॉमन पाथवे में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन इसी से आता है. ठीक है. Intrinsic pathway is also known as contact activation pathway, in vitro pathway. Extrinsic pathway is also known as tissue factor pathway. Clear everyone? Proceed करें. Everyone, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए सभी लोग. चलो. Next there is two tests. Activated partial thromboplastin time. This SSR intrinsic pathway and common pathway. Normal activated partial thromboplastin time is 26 to 40 seconds. ठीक है. Next is prothrombin test. This assess our extrinsic pathway and common pathway. And normal prothrombin time कितना होता है 11 to 16 सेकेंड. क्लियर. एवरीवन क्लियर है दोनों टाइम. एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम दैट एसेस इंट्रिंसिक पाथवे. प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमारा एसेस करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को. क्लियर. चलो अब आते हैं नॉर्मल वैस्कुलेचर में हमारा ब्लड क्यों नहीं क्लॉट कर जाता है. इतने क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो नॉर्मल कंडीशन में दिस एंड कोagulation क्यों नहीं हो जाता है. बिकॉज हमारे बॉडी में विथ कोagulation पाथवे एंटी कोagulation पाथवे भी है. इसमें क्या होता है थ्रोम्बिन कंबाइन करता है थ्रोम्बोमोडुलिन से एंड दिस कॉम्प्लेक्स क्या करता है इन एक्टिवेट आवर प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस. And this activated protein C and protein S inactivate our factor 5 and factor 8. ठीक है. And this thrombin thrombomodulin complex also activate tissue plasminogen activator. Plasminogen activator, this will convert plasminogen into plasmin and there will be lysis of fibrin. Clear? Very much important. Do remember everyone this anticoagulant pathway thrombin thrombomodulin complex. Next is antithrombin 3 combined with heparin and it inactivate factor 9, factor 10, factor 11 and factor 12. Clear? Thrombin thrombomodulin complex, antithrombin 3 and heparin. Clear? Next pathway is tissue factor pathway inhibitor. Next is tissue plasminogen activator जो भी हमने डिस्कस किया. थ्रोम्बिन थ्रोम्बोमोडुलिन कॉम्प्लेक्स इसको एक्टिवेट करता है. प्लाज्मिन का लाइसिस होता है एंड हमारा क्लॉट लाइसिस होता है. नेक्स्ट इज एंडोथेलियन प्रोटीन सी रिसेप्टर. और ये एंटीकोagulation pathway is also regulated in our body and this is regulated by antiplasmin. This is regulated by plasminogen activator inhibitor and this is also regulated by thrombin activable fibrinolysis inhibitor. Clear everyone? Most important thrombomodulin complex याद रखना सभी लोग. प्रोसीड करें. चल. Now coming to the last part ki what is the role of platelet in our hemostasis. First of all, it causes the vasoconstriction via releasing two things, thromboxane A2 and serotonin. These two causes vasoconstriction. This is released by our platelet. Next step में क्या होता है platelet adherence start. This platelet start to adhere with the glycoprotein of cell membrane. ठीक है. And after that what happened? Platelet aggregation starts and this aggregation is due to the presence of thromboxane A2 which is secreted by our platelet only. ठीक है. Next step में क्या होता है? There is formation of definitive clot formation. हमारा clotting cascade activate हो जाता है and clot
clot formation complete हो जाता है. Next, the role of platelet is fibrinous organization of clot is due to the growth factors secreted by the platelet. ठीक है. Next, platelet का जो role है that is clot retraction. ठीक है. कुछ पीरियड के बाद एक्टिवेटेड प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन दैट इज एक्टिन, मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्थेनिन. These are contractile protein in our platelet, and due to that what happen, our platelet start to contract the clot and हमारा clot retraction complete होता है. Clear everyone? प्लेटलेट का क्या क्या रोल है? प्लेटलेट हमारा वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, एडहेरेंस होगा, एग्रीगेशन होगा, हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा, देन डेफिनेटिव क्लॉट फॉर्मेशन होगा, देन फिब्रिनस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लॉट होगा, देन क्लॉट रिट्रैक्शन होगा. दीज ऑल आर मेडिएटेड बाय आवर प्लेटलेट ओनली. क्लियर एवरीवन? क्लियर? प्रोसीड करें. चलो, दिस इज द डायग्राम. दिस इज आवर वैस्कुलर इंजरी. ठीक है. वैस्कुलर इंजरी जैसे ही होगा हमारा प्लेटलेट एडहेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड ADP प्लेटलेट एग्रीगेशन विल स्टार्ट. ठीक है. क्लियर? देखो, दिस इज द ब्रोकन वेसल. एक्टिवेटेड प्लेटलेट आएगा हमारा, प्लेटलेट एडहेशन होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, फिर हमारा क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा फिब्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा क्लॉटिंग कैस्केड से, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटिव क्लॉट. क्लियर? एवरीवन क्लियर? आज का टॉपिक यही एंड होता है. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन स्टार्ट करें. आज के सेशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्रोसीड करें. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन. lymphocyte आर प्रोड्यूस्ड इन ऑप्शन ए lymph node, ऑप्शन बी thymus, ऑप्शन सी bone marrow, ऑप्शन डी none. Everybody answer this question. Lymphocyte are produced in Everyone answer this question. Lymphocytes are produced in. Lymphocyte का production कहाँ होता है? Everyone. It is produced in bone marrow. Further maturation occurs in lymph node and thymus, but the production is in bone marrow only. Very good, Dr. Prakash. Next question. In fetal life, RBC are produced in all except option A liver, option B lymph node, option C spleen, option D bone marrow. In fetal life, RBC is produced in all except. Everyone answer this question. Fetal life में everyone, no Dr. Akash, no Dr. Prakash. Fetal life में हमने डिस्कस किया था from 3 months of intrauterine life to 6 months of intrauterine life. Production is in liver and spleen. ठीक है. After 6 months to 20 years,
The production of RBC occurs in bone marrow. Answer is C. Clear? Now coming to the next question. Erythropoiesis in gestation stage take place in option A, yolk sac, option B, placenta, option C, amniotic sac, option D, chorion. Everyone answer this question. Erythropoiesis in gestation stage take place in नो डॉक्टर आकाश, आई गेस आपने इस क्लास फर्स्ट से अटेंड नहीं किया है स्टार्टिंग से. इरेथ्रोपोइसिस, प्राइमरी साइट ऑफ इरेथ्रोपोइसिस इज आर yolk sac. From 3 month to 6 month of intrauterine life, जो प्रोडक्शन होता है that occurs in yolk sac. ठीक है, from 1 month to 3 months, from 3 months to 6 month जो प्रोडक्शन होता है that is in liver and spleen, and from 6 month of intrauterine life to 20 years जो प्रोडक्शन होता है that occurs in bone marrow of both red bone marrow of both long bones and flat bone. And after 20 years, the erythropoiesis occur in red bone marrow of only flat bones. Clear? So answer is A. Chalo, next question. Site of RBC production in a 20-year-old healthy male is flat bone, long bone, liver, yolk sac. I guess ये clear होगा. अभी just discuss किया था हमने. The site of RBC production in 20-year-old healthy male is वेरी गुड डॉक्टर आकाश. आंसर इज फ्लैट बोन. लॉन्ग बोन्स में जो रेड बोन मैरो होता है that undergo fatty infiltration, and due to this fatty infiltration what will happen? Red bone marrow is converted into yellow bone marrow. So after 20 years, the production is only in the flat bones. Clear? Next question. Granulocyte colony stimulating factor, granulocyte monocyte colony stimulating factor in hematopoiesis cause leukocytosis, erythrocytosis, leukopenia, thrombocytosis. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? Everyone answer this question. Granulocyte colony stimulating factor, granulocyte monocyte colony stimulating factor in hematopoiesis cause. Yes, Dr. Prakash. Answer is leukocytosis. Clear? Next question. Although there are more than 400 blood group system, the ABO blood group system remain most important clinically. Why? Option A, it was first blood group system to be discovered. Option B, it has 4 blood group types A, B, AB, O.
Option C, ABO antigen is present in most body tissue and fluid. Option D, it is ABO antibody are invariably present in plasma when person RBC lack the corresponding antigen. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया. Now everyone answer this question. Why ABO blood group system remain most important clinically? No, Dr. Prakash, answer is D. अगर RBC में एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज हमारा सेरम में प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई ये ABO एंड ब्लड ग्रुप हम अभी तक यूज कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रू अबाउट ABO ग्रुप ब्लड ग्रुप एंटीजन. Option A, found in RBC membrane. Option B, glycoprotein in nature. Option C, highly immunogenic. Option D, autosomal recessive inheritance. Everyone answer this question. True about ABO blood group antigen. Everyone answer this question. It is found on RBC membrane. This is true. It is glycoprotein in nature. This is also true. Option C, it is highly immunogenic. This is also true. So answer is A, B, C. Clear? Chalo. Next, the genotype of a person with blood group A should be. Option A 0OO, option B BO, option C AB, option D AO. क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? Everyone answer this question. The genotype of a person with blood group should be. Very good, Dr. Prakash. Answer is AO या फिर AA. Both expressed as blood group A. Clear? Next question. Erythropoiesis is promoted by all of the following except. Option A, adrenocorticotropic hormone. Option B, thyroxine. Option C, estrogen. Option D, prolactin. Which of the following hormone doesn't promote erythropoiesis? Everyone answer this question. No, Dr. Prakash. No, Dr. Akash. Erythropoiesis हमारा erythropoietin hormone, हमारा thyroxine, adrenocorticotropic hormone, these all increases our erythropoiesis. Our testosterone also increase our erythropoiesis. ठीक है? But the estrogen is the only hormone
that decreases our erythropoiesis. That's why the RBC count in female is less as compared to male. Clear? Answer is C. Now coming to the next question. The normal value of erythropoietin is 10 to 20, option B 15 to 40, option C 45 to 55, option D 55 to 65. The normal value of erythropoietin is. Everyone answer this question. जिपमर मिंगे 2018 का क्वेश्चन है. Everyone answer this question. Answer is 10 to 25. The normal erythropoietin level is 10 to 25 UL. Chalo. Erythropoietin act on option A colony forming unit, option B late erythroblast, option C normoblast, option D burst forming unit. Question clear hai? Everyone answer this question. AIMS November 2018 का question है. Erythropoietin act on. The erythropoietin receptor is highest on very good Dr. Akram. आज ही हमने पढ़ा था colony forming unit has highest erythropoietin receptor. Clear? Next question. Blood is produced in first 6 months in fetus in option A liver, option B spleen, option C bone marrow, option D none. Blood is produced in first 6 months in fetus. Everyone answer this question. Everyone, first 6 month liver, spleen, yolk sac. Yes, Dr. Akram, liver and spleen, both. Yes, Dr. Akash, answer is B. Option A is correct, option B is correct. क्योंकि from 1 month to 3 month, primary site, that is yolk sac. From 3 months to 6 months of intrauterine life, the production is in liver and spleen. Clear? Chalo, next question. Erythropoiesis in gestation stage take place in. Repeat है, skip करते हैं. Option A. Sorry. Next question. At what stage of erythropoiesis does hemoglobin appear? Option A reticulocyte, option B intermediate normoblast, option C early normoblast, option D erythroblast. Hemoglobin starts to appear. Hemoglobin starts to appear in polychromatic erythroblast, which is also known as intermediate normoblast. Answer is B.
ठीक है. And the stage of pro-erythroblast, hemoglobin synthesis starts. And in polychromatic erythroblast, or you can say intermediate normoblast, hemoglobin starts to appear. ठीक है. चलो, next question. Which of the following increases turbulence in blood flow? Option E, Reynolds number less than 2000. Option B, decrease in velocity of blood. Option C, decrease in density of blood. Option D, increase in diameter of blood vessel. Everyone answer this question. Which of the following increase the turbulence in blood flow? No, Dr. Prakash. When Reynolds number is less than 2000, the flow is laminar. Reynolds number is directly proportional to density of blood, diameter of vessel, velocity of blood, and it is inversely proportional to the viscosity. So whenever there is increase in diameter, there will be increase in Reynolds number, and this will cause turbulence. Clear? Now coming to the next question. Flow is laminar in small vessels. Why? Reynolds number greater than 2000. Total cross-sectional area of small vessel is small. Diameter of small vessel is less. Option D, effective velocity in a small vessel is less. Everyone answer this question. Flow is laminar in a small vessels because क्यों कंफ्यूजन है इसमें? Everyone, let's see. Reynolds number greater than 2000, it will cause turbulent blood flow. ठीक है. Reynolds number when it is less than 2000, then only flow is laminar. तो ये ऑप्शन तो गलत है. Reynolds number स्मॉल वेसल का कम होता है, दैट्स वाई लैमिनर होता है. क्यों कम होता है? Reynolds number is directly proportional to the diameter of a vessel. Small vessel has less diameter, that's why Reynolds number of a small vessel is lowest. That's why the flow is laminar. Clear? Diameter of a small vessel is less. Answer is C. Clear? Dr. Akash, Dr. Prakash, Dr. Akram, clear? Chalo, next question. Blood flow through a vessels vary directly with option A, resistance, option B, viscosity, option C, pressure difference, option D, length of vessel. ठीक है, everyone answer this question. Blood flow through a vessels varies directly with our Poiseuille-Higgin formula. Remember that.
blood flow is directly proportional to pressure difference. It is directly proportional to fourth power of radius. It is inversely proportional to the length and viscosity. So blood flow is directly proportional to the pressure difference. Answer is C. Clear? Do remember this formula, Poiseuille-Haken formula. Blood flow is directly proportional to the pressure difference, directly proportional to the fourth power of radius, and it is inversely proportional to length and viscosity. Clear? Next question. Laminar blood flow is dependent on option A, critical velocity, option B, viscosity, option C, constant velocity, option D, critical closing pressure. Laminar flow is dependent on laminar blood flow कब होता है? When the blood is flowing through a constant velocity in same direction. ठीक है, next question. The most effective parameter to decrease blood flow of the tissue bed is diameter of vessel, venous pressure, arteriolar pressure, viscosity. Everyone answer this question. Most effective parameter, blood flow. We all know from Poiseuille-Haken formula, blood flow is directly proportional to the fourth power of radius. And it is inversely proportional to the viscosity. It is directly proportional to the pressure difference. तो इसमें सबसे important parameter है radius, because it is directly related with the fourth power of radius. So if we have to decrease the blood flow, if we will decrease the radius, the blood flow will be decreased more. So the most effective parameter to decrease blood flow is our diameter of vessel. Clear, everyone? Sure. Next question. Flow rate of a vessel A is how many times of vessel B if vessel A has twice diameter of vessel B and it has length twice of vessel B. ठीक है? चलो, everyone calculate this. आर्टीरियोलर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा. हमारा डॉक्टर नीतीश, ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस. ठीक है, बट जो पैरामीटर है वो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करेगा वो होगा रेडियस, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फोर्थ पावर ऑफ रेडियस. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर नीतीश, डॉक्टर राज पावन, सभी का आंसर गलत है. देखो, ब्लड फ्लो it is directly proportional to
Very good, Dr. Raj Pawan. Answer is 8 times. Blood flow is directly proportional to the fourth power of radius, and it is inversely proportional to the length of vessel. ठीक है, तो 2r to the power 4 upon 2l. So answer will become 8 times. Very good, Dr. Apurv. Answer is 8 times. Clear? Next question. In the given circuit, the inward flow pressure is given. Outward flow pressure is 10. Not 100, it is 10. ठीक है? And each of the parallel circuit has a resistance of 5 millimeter mercury per ml per minute. Now we have to calculate the flow. ठीक है? Everyone answer this question. एम्स 2014 का क्वेश्चन है. Everyone answer this question. Everyone answer this question. Remember the Ohm's law? Everyone, what is Ohm's law? Voltage is equals to current into resistance. Here voltage is pressure difference. Current is blood flow into resistance. So here flow will become pressure upon resistance. ठीक है? What is pressure? PA upon minus PB. Pressure difference आ जाएगा हमारा. That is 90 mm of Hg. And we have to calculate total resistance. टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट में कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. याद है सभी को? फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे आपने. तो सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 mm of Hg per ml per minute. ठीक है? So answer will be, the flow will be 90 ml. Clear everyone? Clear है सभी को? चलो. Now coming to the next question. What is the rise of blood flow if the radius of blood vessel increase by 50 times? एम्स 2015 का क्वेश्चन है. Everyone answer this question. What is the rise of blood flow? Yes, doctor. हम hemodynamics पढ़ रहे हैं. तो blood flow is nothing. It is our current. चलो. Everyone answer this question. Blood flow is directly proportional to fourth power of radius. ठीक है? And here the radius become 50 time increase, यानी r plus r by 2 का power 4. That is 1.5 r to the power 4. So it will come approx 5.5. So answer will be 5 times. Clear? Everyone clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आते हैं क्लॉटिंग पे, हमारे वैस्कुलर इंजरी पे. ऑप्शन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन. ऑल आर विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ एपेटिक ओरिजिन एक्सेप्ट 2, 7, 8, 10. All are vitamin K dependent clotting factor except
Everyone answer this question. Length not taken, length given ही नहीं था डॉक्टर प्रकाश क्वेश्चन में. अगर लेंथ होता क्वेश्चन में तो हम कंसिडर करते, क्यों नहीं कंसिडर करते? Very good, Dr. Prakash. Answer is C. Vitamin K dependent clotting factor are factor 2, factor 7, factor 9, factor 10. 2, 7, 9, 10 are factor which are dependent on vitamin K. Answer is C. Clear? Next question. Not a vitamin K dependent factor. Repeat है, skip करते हैं. Which of the following factor is not involved in intrinsic pathway? Everyone answer this question. Which of the following factor is not involved in intrinsic pathway? इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होंगे जो एक्सट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होंगे? कौन कौन से फैक्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं? एनीवन? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्ट फैक्टर 3, फैक्टर 7. ठीक है, सो दिस फैक्टर 7 is involved in extrinsic pathway, that's why it is not involved in intrinsic pathway. Clear? Next question. Substance that is present in both serum and plasma. ठीक है, ऑप्शन ए फिब्रिनोजेन, ऑप्शन बी क्लॉटिंग फैक्टर 7, ऑप्शन सी क्लॉटिंग फैक्टर 5, ऑप्शन डी क्लॉटिंग फैक्टर 2. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन बोथ सेरम एंड प्लाज्मा. What is serum? What is plasma? Anyone? Let's see. This is a serum. What is serum? When we take blood into our flask, test tube, तो क्या होगा? Blood clot नीचे हो जाएगा and हमारा जो serum है that will be separated. What is plasma? जब हम blood को एक test tube में लेंगे and centrifuge करेंगे तो RBC will settle down, WBC will settle down, platelet will settle down. So the liquid present at the top is our plasma. ठीक है? So plasma will contain all the clotting factor. But here the serum that will utilize some clotting factor. ठीक है, और इन विट्रो में कौन सा पाथवे यूज होता है? एनीवन? इन विट्रो वी विल गेट इंट्रिंसिक पाथवे. Clotting occurs via the intrinsic pathway, or you can say contact activation pathway. So the factor required for the extrinsic pathway will not be used, so that will be present in our serum. Clear? तो extrinsic pathway में कौन कौन सा factor involve होता है? Our tissue thromboplastin, our factor 7. So this will be present in both serum and plasma. Clear? Everyone? So answer is our factor 7. B. Clear है सभी को? काफी अच्छा क्वेश्चन था. अच्छा, now coming to the next question. Which of the following help in bridging of the fibrin in a clot and stabilize the clot?
The clot form is not stable until extensive cross-linking. And this extensive cross-linking is by which clotting factor? Question समझ में आ गया? Everyone answer this question. Which of the following help in bridging the fibrin in a clot and stabilize the clot? Everyone answer this question. Which factor is responsible for the extensive cross-linking of blood clot? Answer is factor 13. This is fibrin stabilizing factor. This causes extensive cross-linking of fibrins. Answer is A. Clear? Now coming to the next question. Conversion of fibrinogen to fibrin is why? Prothrombin, factor 3, thrombin, kallikrein. Everyone answer this question. Conversion of fibrinogen to fibrin is why? Very good, doctor. Answer is thrombin. हमारा जो prothrombin है that is converted into thrombin in the presence of which factor? In the presence of activated factor 5, activated factor 10, and in the presence of calcium, that is factor 4. And this thrombin convert the fibrinogen into fibrin. Clear? Next question. Same question, repeat है. Extensive cross-linking and stabilization of clot is via factor 13. That is fibrin stabilizing factor. So skip this question. Next question. Which of the following anticoagulant prevent the clotting of blood in normal vasculature? Option A, antithrombin 3. Option B, plasminogen. Option C, fibrinogen. Option D, heparin. Which of the following anticoagulant prevent the coagulation of blood in normal vasculature? Answer is both A and D. Antithrombin 3 and thrombomodulin complex. This also play a major role in anticoagulant pathway. ठीक है? So answer is both A and C. Oh, sorry, A and D. Next question. This thrombomodulin, it is produced by all of the following except splanchnic circulation, skin circulation, cerebral circulation, muscle circulation. Everyone answer this question. Thrombomodulin 1 is produced by all of the following except this thrombomodulin is not produced in our cerebral circulation. Answer is C. Remember this one. Clear? Next question. The blood within the vessels doesn't clot normally because option A, vitamin A antagonist is present in plasma. Option B, thrombin has positive feedback on plasminogen.
Option C, sodium citrate in plasma chelates the calcium ion. Option E, vascular endothelium is smooth and coated with glycocalyx. Question पढ़ लिया सभी ने? Now everyone answer this question. Why does the blood doesn't clot in normal vasculature? विटामिन के एंटागोनिस्ट, कौन सा विटामिन ए एंटागोनिस्ट प्रेजेंट होता है यार प्लाज्मा में? आंसर इज डी. हमारा वैस्कुलर एंडोथेलियम क्या होता है? स्मूथ होता है एंड दिस इज कोटेड विथ ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, जो प्लेटलेट एडिशन होता है दैट अकर्स इन द रप्चर्ड वैस्कुलर एंडोथेलियम. ठीक है, वैस्कुलर एंडोथेलियम स्मूथ होता है, नॉर्मली कोटेड बाय ग्लाइकोकैलिक्स, तो प्लेटलेट एडिशन नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोक्सिन A2 कॉजेस vasodilation, vasoconstriction, platelet aggregation, antiplatelet aggregation. ठीक है, everyone answer this question. Thromboxane A2 cause. Thromboxane A2 cause anyone? हमारा जो thromboxane A2 है that is secreted by our platelet only and this causes vasoconstriction and causes platelet aggregation. Answer is D. Clear? This vasoconstriction is via serotonin and thromboxane A2 which is released by our platelet only. Clear? Now coming to the next question. During hemostasis, platelet affect the coagulation area. Option A, platelet adhesion to exposed endothelium. Option B, clot retraction. Option C, activation of prothrombinase complex. Option D, vasoconstriction. Option E, conversion of fibrinogen into fibrin. Everyone answer this question. During homeostasis, platelet affect the coagulation area. This question has multiple answers, so everyone read the each and every options. Correct. Option A is true. Platelet adhesion. It causes clot retraction because platelet contain retractile protein like thrombokinase, actin, thrombosthenin. Retractile protein like thrombosthenin, actin, which causes clot retraction. Option A is correct. Option B is correct. It activates our clotting cascade. So it activates our prothrombinase complex. Platelet release vasoconstrictor, that is our serotonin, our thromboxane A2. So all are correct. Option A, B, C, D, all are correct. Next question. I guess that was last question of today's session. Thank you so much everyone for joining. आज के सेशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? Everyone. क्लियर है सभी को?
Thank you so much everyone for joining. If you like the session, do like and share with your friends so that many more can join. Do subscribe our channel, that is Let's Crack NEET PG. Most welcome Dr. Pandey. And press the bell icon so that you will get notification of every class and you won't miss a single class. Do follow me on Telegram so that you can Glycocalyx, Dr. Prakash. किसका क्वेश्चन में कंफ्यूजन है? दिस ग्लाइकोकैलिक्स, जो हमारा नॉर्मल वैस्कुलेचर है वो स्मूथ होता है एंड इट इज कोटेड विथ अ ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, यही ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से जो नॉर्मल प्लेटलेट है वो एडहेयर नहीं करता है. जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे एंडोथेलियम का तो आप डिटेल में इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि ग्लाइकोकैलिक्स कैसा होता है. ठीक है, बट जो प्लेटलेट है दैट इज नॉट एडहेयर विद द ग्लाइकोकैलिक्स. जब भी हमारा एंडोथेलियम रप्चर होगा देन ओनली हमारा जो प्लेटलेट है वो एडिशन स्टार्ट होता है. क्लियर? प्लेटलेट एडिशन स्टार्ट होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, डेफिनेटिव क्लॉट का फॉर्मेशन होगा. क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. Do subscribe and follow me on Telegram, that is NEET Physiology. This is my page. You can follow me out there so that you will get notification of every class and you won't miss a single class. This is my referral code. Do use this referral code if you take the subscription so that you will get instant 10% discount in your subscription and your subscription fee will become more economical. ठीक है? Learning from home can be difficult, but you can definitely achieve your target. You can definitely be in your dream college. करना क्या है, रेगुलर आप सिलेबस कवर करते जाओ. सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपको MCQ करना है. अगर आप MCQ नहीं करते हैं तो आप अपने नॉलेज को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे. तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस कीजिए, थ्योरी पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए so that you can achieve your target. You can be in your dream college, everyone. Thank you so much everyone for joining.